नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है हमारे प्यारे इंस्ट्रक्टर सीए निखिल ढींगरा सर। So Nikhil sir is working in the industry for about almost a decade और इंटरनल ऑडिट के एक्सपर्ट है हमारे थिंकिंग ब्रिज के प्लेटफॉर्म पर। आज लेकिन हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स एक इमर्जिंग फील्ड है जिसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और उस फील्ड में निखिल सर स्पेशलाइज करते हैं बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज so many certifications to his credit and he himself enjoys playing around those softwares. And how has he utilized data analytics in his career? That's what we are going to talk about in this particular video. Welcome Nikhil sir, how are you doing today? Thanks Pooja, all good, and I think it's even better that we're recording on a weekend. So Yes. it is a working weekend for us. Yeah. But all good. Thanks for having me here. And yeah, I think it's been a decade for me as a working professional. I started my career with consulting in one of the big fours. Spent there for over 8 years, and then I moved to industry. So I think the journey's been pretty good, and I think it's all going smooth and all good. Right. So Nikhil, specifically, since this particular podcast is dedicated to data analytics field, so I think let's open the podcast with this, detailed explanation so that our audience can understand कि यार ये data analytics किस चिड़िया का नाम है and what does it mean for a finance professional? Yeah, absolutely. So I think मतलब अगर हम data analytics की बात करें तो data is basically something which is present everywhere. You do anything, whatever gets processed is creating data, right? तो अगर हम basically हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो basically एक डेटा क्रिएट हो रहा है and somewhere you will probably take out insights from this video, right? So data can be anything. तो whatever you do, मतलब अगर मैं finance side में बात करूँ, let's say for example marketing की मैं बात करता हूँ, तो there's a lot of marketing analytics that happens, right? अगर आपको let's say performance marketing को analyze करना है तो आपको data देखना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि let's say आपने कुछ advertisement run की है तो उसने कितनी eyeballs generate की है, right? आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ज्यादा फुटफॉल होता है जहां पर आप वो उस एडवर्टाइजमेंट को रन कर सकते हो. आपका पूरे दिन में किस टाइम पे लेट्स से सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लोग होते हैं. तो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग बेसिकली यू आर एबल टू असेस बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डेटा दैट इज प्रेजेंट देयर. पीपल लॉग इनटू इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल, तो वहां पे हमें दिखता है कि एक स्पाइक आता है लेट्स से लेट इवनिंग, राइट? लेट्स से 8 to 10 PM. तो it will make sense that you run your advertisement around that time, right? But आपको पता कैसे चला? Because you've analyzed the entire day's data over a period of time. तो data is basically present everywhere. तो अगर आपको let's say एक और मैं example दूँ, अब आपको let's say you're in a cost department, production department. अब आपको देखना है कि कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स गैदर करने पड़ेंगे. आपको ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट के लिए what exactly is the market, वो कहाँ पर सबसे ज्यादा बिकता है, कहाँ पे पेनिट्रेशन की जरूरत है, या फिर लेट्स से अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो what exactly is the efficiency with which the machinery is working, right? Is it at a let's say a 65% utilization or an 80% utilization? तो ये सब आप कर पाओगे डेटा को एनालाइज करके. तो ये एग्जांपल्स है डेटा के. तो डेटा इज बेसिकली एवरीवेयर, बट आपको अगर डेटा को एनालाइज करना है, व्हेन वी से एनालाइजिंग द डेटा इज बेसिकली दैट एग्जैक्टली मींस इज दैट यू हैव टू क्रिएट मीनिंगफुल इनसाइट्स आउट ऑफ दैट डेटा. तो आपको वो डेटा जो है गार्बेज डेटा हो सकता है बहुत सारा पड़ा, उसमें से आपको कैसे इनसाइट्स निकालनी है, कैसे आप उसको एनालाइज करोगे to make an informed decision is basically what data analytics is about. That is quite extensive explanation. एक बहुत ही basic doubt है, and I'm asking this on behalf of multiple queries that we receive on day-to-day basis.
So data analytics in itself is a vast career. We see people from all walks of background, people from engineering background, people from, psychology background, people from finance background. Like since we belong to finance background, they're all trying to make their careers in data analytics. So what does it mean for a finance professional? What does it mean for and a science background student to penetrate into the field of data analytics? Like how is it different, or कोई difference है भी या नहीं, या फिर कुछ actually में superficial सा difference है? See, the beauty of data analytics is that anyone can do it, as long as you're smart enough to basically gather insights, uh, or basically if you basically try to understand what exactly is the objective with which you want to analyze the data, anybody can do it. जरूरी नहीं है that you are a commerce professional or a science professional तो ही, जैसे वो for example मैं term बोलूँ data scientist, right? It does not necessarily mean that you have to study science for it. It's a separate course in itself. तो उसके लिए ये होता है कि probably that there could be some languages that you need to know, जो technical languages होती है, ठीक है? जैसे for example R की अगर मैं बात करूँ, so R is a tool and R is a language. तो अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे एनालाइज करना है डेटा को, तो यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस बिकॉज अ लॉट ऑफ टूल्स आर, अगर मैं उनका बेस लैंग्वेज बोलूं, a lot of tools are dependent on some of these languages. It could be, let's say, SQL or R or something like that. So, but the point is that you need not be an engineer or you need not study science to learn all of this. थोड़ा सा टेक्निकल है बट इतना टेक्निकल नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हो. बट अगर मैं कॉमर्स प्रोफेशनल की बात करूँ, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिट करते टाइम या फिर आप कंसल्टिंग में भी हो, तो आपको क्या करना होगा, आप आपको एक आपको एक डोमेन आपने पिक किया ऑडिट करते टाइम, कंसल्टिंग के टाइम या कुछ भी, एंड आपको अब ये देखना है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव रीच करना है, एंड दैट कुड बी, लेट्स से यू हैव टू फाइंड अनोमलीज या फिर गैप. अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में घोस्ट एम्प्लॉइज है ना, हाउ विल यू डू दैट? यू विल हैव टू एनालाइज सम डेटा, राइट? या फिर लेट्स से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वेंडर्स को डुप्लीकेट इनवॉइसिंग प्रोसेस कर रहा हूँ. Now, how will you do that? You have to analyze the population of all the invoices. Now, for this, you need not study science, right? आप ये analyze कर सकते हो because you have the data, you know the objective. आपको duplicate invoices find out करनी है, तो आपको ये चीजें देखनी है कि क्या क्या वो ऐसे factors होंगे जिससे आप वो find out कर सकते हो. So all you basically need to understand is कि आपका objective क्या होने वाला है. You should be hands on in terms of whatever tool you're using, कि उस objective को reach करने के लिए आपको थोड़ा सा play around करना आना चाहिए उस tool से related. तो वो tool से related आपको कैसे आएगा, वो आपको आएगा practice करके, because nobody can learn all the functions in a tool, right? Because बहुत ज्यादा होते हैं वो. तो वो आपको आएगा आप जितना ज्यादा डेटा एनालाइज करोगे, जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे खुद से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, you will understand, you will become efficient in terms of analyzing data. तो अगर मैं कॉमर्स से बोलूँ, जैसे मैंने थोड़े ऑडिट रिलेटेड एग्जांपल्स दिए, अब अगर मैं ऐसी कंसल्टिंग रिलेटेड बोलूँ, लेट्स से आपको मैंने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मशीनरी की यूटिलाइजेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप डेटा से एनालाइज करोगे. दिस इज थोड़ा सा ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करने के लिए थोड़ा सा कंसल्टिंग रिलेटेड हो गया. या फिर लेट्स से आपको बहुत सारे ऐसी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन रिव्यूज करने हैं कि हाउ एग्जैक्टली कैन यू रिड्यूस कॉस्ट. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की मैं बात करूँ, आपका एक किसी भी कंपनी के पीएनएल में मेरे एक्सपेंस साइड पे एक आता है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. लेट्स से कॉल सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो शिफ्ट्स पे रन करते हैं वो. करेक्ट. तो उसमें दे प्रोवाइड कैब्स टू देयर एम्प्लॉइज, राइट? नाउ these shifts are 24/7, so the cabs are flying 24/7. But that cost is huge for that organization. It could be hundreds of crores. Now they want to run a review जहाँ पे they want to optimize this cost. अब आपको डेटा एनालाइज करना होगा. आप क्या देखोगे? आप यही सारी चीजें देखोगे ना, कि ऐसी कितनी कैब्स है जहाँ पे लेट्स से सिंगल एम्प्लॉय मेरा ट्रैवल करता है, ऐसे कितने एम्प्लॉइज है जहाँ पे लेट्स से मेरी इनोवा है बट जाते हैं वहां पे सिर्फ 2 एम्प्लॉइज ही है,
कैन आई लेट्स से क्लब अ लॉट ऑफ रूट्स टुगेदर, ठीक है, या फिर कैन आई फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक जगह पे जहाँ पे मेरी एक 7 सीटर जा रही है वहाँ पे मैं 2 4 सीटर भेज दूँ, या वाइस वर्सा, जहाँ पे मेरी 4 सीटर जा रही है मैं वहाँ रूट क्लब करके 7 सीटर भेज दूँ, या फिर एक बस मैं या एक ट्रैवलर वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा दूँ. So how exactly can you do that? You can do that by analyzing data, right? Now this is an example of consulting. अब आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन रिव्यू रन करने होंगे तो आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि आप कैसे एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ला सकते हो किसी भी प्रोसेस के अंदर. ऑडिट में हमें गैप्स आइडेंटिफाई करके हैं. तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है. अगर मैं कॉमर्स साइड की बात करूँ, आप कैसे कर सकते हो. नाउ सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट साइंस, तो साइंस में अगर मैं डेटा साइंस से रिलेटेड बात करूँ तो मेरा थोड़ा सा मेरा होता है, जैसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस की हम बात करते हैं तो वो मशीन लर्निंग की मैं बात करूँ या एआई की बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो थोड़ा सा इसमें जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी. आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड पीपल आल्सो who've done masters in analytics. तो उसमें आपको ऐसी जो एडवांस लैंग्वेजेस होती है जैसे कि आर मैंने बोला था, उसमें आपको वो सिखाते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है वो थोड़ा सा एक एडवांस लेवल हो जाता है. जब आप मशीन लर्निंग की बात करो तो मशीन लर्निंग इज समथिंग यू कैन डिप्लॉय इन अ प्रोसेस instead of identifying how you can optimize a process, you deploy that tool in that process. तो यहाँ पर या तो आप कुछ ना कुछ मैनुअल वर्क ऑटोमेट कर सकते हो, just to give an example, या फिर आप ऐसी बहुत ही क्रेजी इनसाइट्स पे ड्राइव कर सकते हो थ्रू मशीन लर्निंग. तो एंड मशीन लर्निंग इज समथिंग दैट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. ठीक है, तो अब जैसे ही अगर मैं बोलूं, मैंने डुप्लीकेट इनवॉइसिंग की मैंने बात करी थी, तो डुप्लीकेट इनवॉइसिंग एक कॉमर्स बैकग्राउंड का एक कोई होगा मेरा प्रोफेशनल, तो वो डेटा को एनालाइज करके कर सकता है. बट सिमिलरली आप मशीन लर्निंग से ऐसे एडवांस लेवल टूल्स बना सकते हो जो आपको खुद ऐसे रिजल्ट्स निकाल के दे देगा दैट दिस इज अ डुप्लीकेट इनवॉइस दैट वाज प्रोसेस्ड. तो मतलब बेसिकली इन अ वे इट्स क्वाइट इंटीग्रेटेड, बट दैट इज हाउ इट प्लेज अराउंड इन द इंडस्ट्री. Right. So, what I could make from this entire discussion was, I mean, correct me if I'm wrong, कि data analytics जो है, it's like based on two pillars. Like one is logic, what kind of insights you have to ascertain from the voluminous data, and second is the tools that you are applying in order to, get that logic fulfilled. So, am I wrong or am I right? Like. No, you're absolutely, I mean, it's bang on. So basically, one thing is we should know the tool. The other, and because a tool is nothing but an enabler, right? But the most important thing is what exactly do we want to achieve by analyzing the data? Right, and so that's the where most, yeah, go ahead. I'm saying that's where your analytical mindset will come in, that you should be able to draw useful insights, otherwise तो फिर मतलब फायदा ही क्या है. Absolutely. And see, the point is कि let's say you have to now present something to a management, right? Management is something जो I'm talking about किसी भी organization के top के जो CXOs हो सकते हैं, top management I'm talking about. Now they would be interested to know a lot of different sorts of insights. Now you have to be smart enough how you would want to analyze the data. You have to sit in their chair and think कि एक मैनेजमेंट को क्या देखना है उस डेटा से. तो आपको वो माइंडसेट से जाके डेटा को एनालाइज करना है और वहां से आपको इनसाइट्स देनी है. राइट. So I think we should now talk about, analytical mindset plus how you apply logic is something that you can gain with experience. I think it's time we talk about the tools here. Like when you say data analytics, I believe, you have to perform analysis. So what are the tools that are usually used in the finance industry or in general in the data analytics industry that people can tinker around, or maybe, like at least get their hands on कि अच्छा मैं शुरू करके देखता हूँ, where will I lead now? Yeah, see, मैं पहले थोड़ा सा पुराने जमाने से भी शुरू करता हूँ. तो हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से. तो एक्सेल इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बिकॉज एक्सेल से ना आपका एक अगर मैं ब्रेन का एक डायरेक्शन की बात करूँ तो एक वो डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि आपको कैसे,
एंड टू बी ऑनेस्ट, आप कोई भी टूल, जब एडवांस टूल्स भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो ना, the first thing that comes into your mind is how exactly would you do this on Excel. So तो it kind आप of like वहां lays the background. exactly, it is basically sort of a base tool we can say, क्योंकि यहाँ से आपका एक माइंड जो है वो आपका ड्राइव होना स्टार्ट होता है. तो मैं एक्सेल की बात करूँ तो एक्सेल हाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बट एक्सेल की बहुत सारी लिमिटेशंस है. एक्सेल कैनॉट हैंडल अ लॉट ऑफ डेटा. तो अगर जैसे ही वॉल्यूम की बात हो जाती है हमारी, तो एक्सेल विल फेल. एक्सेल हैज अबाउट 1 million रोज. तो उसके अंदर मैं जैसे ही 2 लाख 3 लाख रोज तक पहुंचूंगा ना, तो वो एक्सेल का हमेशा ना क्या होता है, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टार्ट हो जाता है. तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता इतना हेवी डेटा. So now we need advanced tools. Now if I talk about advanced tools, तो मेरे पास SQL आ जाता है. बस एक बार स्टॉप करूंगी. हाउ मच डेटा आर वी टॉकिंग अबाउट? बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव द ऑडियंस एन आइडिया कि यार यहाँ पर मतलब इतने सारे रोज और इतने सारे कॉलम्स की बात हो रही है. अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ. डू यू शॉप ऑनलाइन या आई डू. frequently? नॉट रियली बट हाँ आई डू. Let's say on an average, daily average customers on, for example, Myntra or any e-com app are about, for example, 5 lakhs a day. Just giving an hypothetical example. Now, these 5 lakh people are at least doing one transaction a day, because these are, let's say, daily active users, right? Now, for example, if I talk about just one day, there are 5 lakh customers who might have, let's say, bought multiple items, probably 10 items in a single transaction, right? Now, 5 lakhs into 10 is basically 50 lakh rows I'm talking about in a day. And when I said Excel, so Excel में तो मैंने बोला कि total rows ही मेरी close to 10 lakhs है. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा दिया which basically people will be able to relate if I talk about any e-com app. तो उसमें they would be able to easily assume कि यहाँ 5 लाख लोग मेरे एक hypothetical example में आ ही रहे होंगे. Per user, let's say 10 items they might be buying. तो 50 लाख रोज मेरी एक दिन की हो गई. अगर मैं एक आइटम भी सोच के चलूं तो 5 लाख तो मेरी मिनिमम हो गई. Now Excel cannot process this data, and you will basically spend weeks and maybe months or probably years if you want to analyze this data. Right. वो घूमता रहेगा, not responding होता रहेगा, but you will not be able to drive any insights. So now you need advanced tools. Right. तो अब मैं advanced tools की बात करूँ तो हमारा SQL हो जाता है, फिर हमारा Alteryx हो जाता है. There's another tool called EasyMorph. ऐसे बहुत सारे मेरे टूल्स हैं जो डेटा को एनालाइज करने में यूज होते हैं. Okay. ठीक है. एंड देयर कुड बी पाइथन और आर आल्सो. तो ये सारे हमारे डेटा एनालिटिक्स करने के लिए टूल्स हैं. Now why these tools? Just a small confusion here, Nikhil. Is R and Python a language on the basis of which these tools are built, or is it something else? So these are languages only. तो इसी इन लैंग्वेजेस के ऊपर हमारे टूल्स बेस होते हैं. बट आई थिंक पाइथन का एक बहुत ही फेमस अगर मैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस लैंग्वेज के बेसिस पे वो हमें ये टूल प्रोवाइड करता है, आई थिंक इट्स कॉल्ड एनाकोंडा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. I think it's been a while. I haven't used that, so I'm not able to recall that name, but I think it is that. तो ऐसे ही हमारे काफी सारे टूल्स होते हैं. जैसे Alteryx, I think if I'm not wrong, is SQL based. Okay. So the base language is SQL, but the tool is Alteryx. तो ये tools ने ऐसे develop होते रहते हैं कि UI के basis पे कि कितना user friendly ये tool है. जैसे if I talk about Alteryx is basically, for me, based on my experience, I find it to be the most user friendly tools across all of these tools, because literally I do not have to write any language. Say SQL में I have to literally write a command that whatever, if this then this and whatever I have to properly like write it down. But in Alteryx, all I need to do is just drag and drop whatever function I want to use. I just need to drag that tool वहाँ पे, and I just need to tell कि मेरे को exactly करना क्या है, and then background में Alteryx will process that for me.
Okay. So it is nothing but a drag and drop tool. And obviously, you have to apply some mind to at least tell the tool what exactly you want to do with the data. Hmm. ऐसे ही पाइथन आर ये थोड़ी सी ज्यादा एडवांस थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेजेस हो जाती हैं बट मतलब in terms of efficiency I mean there is no match in terms of when I say efficiency की कितना जल्दी वो डेटा प्रोसेस कर सकते हैं now Alteryx की अगर मैं बात करूँ when I was talking about Excel तो ये डेटा प्रोसेस भी नहीं कर सकता Alteryx can do this in probably within a few seconds or a few minutes depending upon how heavy the data is. So Hmm. personally, I have analyzed data जिसके around approximately 5 crore rows थी. तो 5 crore rows तक भी मैंने data Alteryx पे analyze किया हुआ है. Hmm. And it took a couple of minutes to analyze whatever I wanted to do. And the beauty of Alteryx is that let's say, for example, for a task which is repetitive in nature, ठीक है? Hmm. Let's say monthly बिकॉज हम बहुत ही फाइनेंस रिलेटेड बात भी कर रहे थे तो देयर कुड बी मंथ एंड क्लोजर्स फॉर एनी फाइनेंस प्रोफेशनल राइट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर अगर मैं एफपीएनए की बात करूं फाइनेंशियल प्लानिंग तो उनको भी हो सकता है कि बहुत ही रेपिटेटिव बेसिस पे सिर्फ डेटा सेट चेंज हो रहा होगा बट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम होगा उसको Hmm. एनालाइज करना होता होगा नाउ टू डू दैट लेट्स से इन एक्सेल every month is something that I am basically spending each month time on to analyze something in if in process terms is quite similar. Hmm. Alteryx की beauty ये है कि I can automate that in Alteryx. All Hmm. I need to do is basically just define a workflow कि ये मेरी इनपुट फाइल होगी ये मेरा स्ट्रक्चर होगा मैंने कमांड दे दिया कि मेरे को ये ऐसे ऐसे एनालाइज करना है डेटा मैंने Hmm. वो वर्कफ्लो चेंज किया all I need to do is just change the input file every month or every week depending on whatever the frequency is all I need to do is just change that frequency or it change that input file and just run the workflow and I will get the results तो वो Hmm. जो मेरे को repetitive मेरा टास्क था वीकली मंथली या जिस भी फ्रीक्वेंसी पे instead of doing it each time I have developed a workflow I just need to change the input run the workflow and I'll get the output so that's the beauty of Alteryx it can basically automate a lot of processes also Hmm. a lot of Right. manual tasks सो इन अ वे मतलब जैसे हम एक्सेल में अपना मॉडल्स बनाते हैं जैसे फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं सेम वे हम अपने ऑल्ट्रिक्स में वर्क फ्लोज बनाते हैं इन ऑर्डर टू ऑटोमेट द वर्क राइट yeah absolutely ओके सो एज अ रिस्क एंड एडवाइजरी कंसल्टेंट what tools apart from Alteryx do you use on a day-to-day basis? so apart from Excel Alteryx there's a lot of Power BI that gets used तो Power BI and Alteryx में मेरा डिफरेंस ये हो जाता है कि Power BI is a data visualization tool. Okay. It is basically an interactive tool. आपने relationships establish करने हैं Power BI के अंदर Hmm. and उसके अंदर relationships establish करने के बाद when once you create a dashboard, that dashboard is in itself interactive in nature. So basically you click on something आपको let's say मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग ब्रिज में निखिल ढींगरा ने कौन कौन सी क्लासेस कौन से मास्टर क्लास बनाई हुई है तो आई जस्ट क्लिक ऑन निखिल ढींगरा एंड इट विल टेल मी कि डिपेंडिंग ऑन मैंने कितने रिलेशनशिप्स डेटा के एस्टैब्लिश किए हैं इट विल गिव मी ऑल द इनसाइट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डैशबोर्ड दैट आई हैव क्रिएटेड तो आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन समथिंग इन दैट डैशबोर्ड एंड ऑटोमेटिकली जो भी उससे रिलेटेड इनसाइट होगी वो मेरे को दे देगा So that's the beauty of Power BI कि real time interactive एक dashboard वो create कर देता है. So Power BI is one tool. Power BI का एक और भाई जैसा tool भी होता है that is Tableau. तो Tableau Power BI is something which is widely used across organizations. Okay. So एक again like one silly question here. ये मैंडेटरी है फॉर अ फाइनेंस प्रोफेशनल टू लर्न ऑल दीज की ये ऑप्शनल है कि ठीक है कर लिया तो आप कर लिया नहीं किया तो भी चलेगा काम देखो मैंडेटरी तो कुछ नहीं होता इट इज समथिंग कि आप अपना स्किल कैसे अपने आप को आगे रेस में ले जाने के लिए हाउ एग्जैक्टली डू यू अपस्किल योरसेल्फ तो I won't say it is mandatory, but I will definitely say that
99% of the time it will prove to be an advantage for you. Then how are 1% other people who are, you know, who don't have these skill set जो इस particular tools को लेके वो फिर कैसे कर रहे हैं अपना काम, वो वही टाइम लगा रहे हैं इतना, वो इतना टाइम लगा रहे हैं, तो वही जब हम एफिशिएंसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा सा वहां पे मेरा ग्राफ चेंज हो जाता है. तो इफ यू हैव टू बी एफिशिएंट, इफ यू have to like really stand out, you need to learn these tools because see the I mean just to give a comparison, अगर एक ऐसा प्रोफेशनल है जो कि एक्सेल पे एनालाइज कर रहा है वही ई कॉम वेबसाइट का डेटा वर्सेस एक ऑल्ट्रिक्स पे एनालाइज कर रहा है, तो ऑल्ट्रिक्स पे वो एनालाइज करके इनसाइट देके लाइफ में आगे बढ़ चुका है और एक्सेल पे वो अभी भी नॉट रिस्पॉन्डिंग पे घूम रहा है. So I mean just to give you just to make this to you relatable, so that's how it works out. So it is not mandatory, but if you want to stand out, if you'll have to upskill yourself because आज की डेट में डेटा इतना ज्यादा हो चुका है that you can't survive without learning all these tools. Absolutely. So Nikhil, I mean, how can one, I mean, obviously there are so many like courses, free YouTube lectures are there, but if somebody is in finance, right, like what is the proper route? Okay, sabse pehle obviously they need to have some basic understanding of Excel. So how do you progress through these tools? What is the sequence that one should follow in order to ace in all these tools? I think start with Excel any day because that sort of creates a base for you to kind of, because so once you move to Alteryx also आपको चीजों को रिलेट करना है. रिलेट करने के लिए आपको एक्सेल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लेट्स से एक्सेल में आपको वो चीज करनी आती है तो आपका माइंड मैप वैसे ही काम करेगा कि कैसे आप सेम चीज ऑल्ट्रिक्स में करोगे. So to set that base, you need to learn Excel first and then move on to these advanced level tools. So Nikhil, like as a finance professional, as a chartered accountant, as somebody who is working in this industry for almost a decade, what challenges with respect to data do you personally face on a day-to-day basis, and how do you, go about solving them? Okay, so I think probably one of the challenges is in terms of preparation of data. So there could be a lot of unstructured data available. So you really need to structure that data to kind of start working on it, to analyze that. So I think one thing is you need to understand how you can structure the data well to be able to start working on it. So one thing is that, the other thing is how you're able to handle the large volumes of data. So I think these two probably are the main challenges that people face. One is in terms of how unstructured it is, how they can learn to prepare data to be able to analyze it, and the other is how they can manage the volume. Right. So abhi jo young professionals ye video dekh rahe hain, and if they want to get started into the field of data analytics, ki theek hai mujhe bhi seekhna, I want to get started, how can they get started? See, I think what we've talked about in terms of learning the tools is something which is pretty clear by now. But the other thing is that one piece of advice that I would want to give to each one of you is learn to build a story. मतलब एक चीज होगी that you are analyzing data, that is one thing, but how beautifully you are able to present that data in terms of insights is another key thing. मतलब analyze तो आपने कर लिया, but the ultimate thing is that you have to present it also. तो आप वो कैसे visualize करके दिखा रहे हो, just remember that you always need to build a story in terms of your presentation. कि let's say you start with whatever the entire population was of the data, उसमें से आपने जो भी insights थे वो draw किए कि let's say 50% is this, 20% is this, whatever. And then ऐसे इसको drill down करते करते you reach to a conclusion. So basically you're kind of building a story around that data. So just always remember, whenever you're presenting data, have a story ready. Story should flow, because once the story is there and it is flowing in a direction,
that is how you kind of pull your audience. Right. So that is, I think, one piece of advice. राइट एंड फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग, और अगर आपका अभी तक इंटरेस्ट एकदम जाग चुका है डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, सो यू मस्ट चेक आउट द data analytics masterclass by CA Nikhil Dhingra and CA Arshit Agarwal, which is available on Thinking Bridge. और उसमें हमने एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, ऑल्टरएक्स जैसे टूल्स को कवर करा है. एंड इफ यू आर इन फाइनेंस एंड यू मस्ट डू इट, and it definitely will be a great addition to your resume, and in general will definitely help you out during at your workplace as well. So Nikhil sir, अब हम अपने master class की बात करते हैं, that what exactly, I mean, have we covered in this entire master class? Have we like started from the basics, or we've talked about the intermediate level, and क्या क्या चीजें और बेनिफिट कर सकती हैं once a student decides to take this course up? See, I think when we were designing this course, one thing that we pretty much were clear on was that we need to design it in a way कि कम से कम time में maximum advantage मिल सके. Because I mean there are a lot of courses that are available online. And there could be free courses also available on YouTube or probably Udemy or any other such online platform. वहां पे आई थिंक एक चैलेंज ये होता है कि मैं जब भी देखता था ना, मेरे को ऐसा दिखता था कि यार ये 10 घंटे की क्लास है, ये 15 घंटे की क्लास है, और उस पर होता कुछ नहीं था कि मुश्किल से वो 3 या 4 फंक्शंस एक्सप्लेन करते थे, पूरा बताते थे कि ये टूल ऐसे दिखता है, ये होता है, ये होता है. ऑनेस्टली मेरे में इतना पेशेंस कभी नहीं था कि मैं 20 घंटे बैठ के एक टूल के 4 फंक्शन सीखूं. आई थिंक वन थिंग दैट वाज that we guys are pretty clear about was that what are those frequently used functions in each and every tool that are being used on, let's say, a day-to-day basis. Because once students know about this, they kind of understand this. अगर इसके आगे advanced जाना है, now that is going to be their journey. Right. They want to learn more apart Right. from what we taught, because we've made them sort of industry ready. Even if they go tomorrow and they want to analyze some data, they will know how to do it, because we've sort of covered all these frequently used functions. But अगर उसके आगे उनको advanced जाना है, now they have to kind of practice on a day-to-day basis to achieve that. So we were pretty certain कि हमें minimum time में maximum gains देने हैं. तो और हमें ये भी clear था कि what exactly is a base setting tool and how people can advance from there. तो in the entire course हमने पहले एक बहुत ही basic introduction रखी है, so that people are able to relate and they're able to understand what exactly is data analytics, because सुनने में बहुत ही fancy term लगती है. Then वहां से हमने वही जो अभी भी मैंने बोला है, Microsoft Excel is the base. So Microsoft Excel is something that Archit has covered. तो अर्चित ने पूरा from basics to whatever gets used in terms of frequency and सबसे ज़्यादा functions use होते हैं, तो वो Excel में cover हुआ है. Then Excel से वहां से हमने उसको बहुत ही beautifully transition किया है Alteryx और Power BI में. कि सबसे पहले थोड़ा Alteryx की अगर मैं बात करूँ तो Alteryx से familiarize किया लोगों को, और बहुत सारे वर्कफ्लोज ऐसे रन करके दिखाए हैं कि अगर आपका अब ये स्टेप होगा, हाउ एग्जैक्टली यू विल यूज these functions and what this function is basically about. एंड वहां से एक पूरा वर्कफ्लो रन करके दिखाया, ये दिखाने के लिए कि कैसे अगर आपको एनालाइज करना डेटा आप कैसे कर सकते हो. एंड प्लस similar set of data जो Excel में यूज हुआ था, because we wanted to transition from Excel to Alteryx. तो same analysis को हमने Excel से lift and shift किया है Alteryx में, so that people are able to relate कि same चीज जो Excel में है वो possible है Alteryx के अंदर भी. And हमने Power BI को भी उसी तरीके से किया कि हमने डेटा लिया और बताया कि ऐसे कौन कौन से आपके let's say डेटा विजुअल्स है जो आप यूज कर सकते हो to basically drive insights or maybe visualize data. So that's how the entire course is structured. Minimum time but maximum gains.
Right. So not only will they be able to understand the functions, but they'll be able to, learn how to design those workflows in the finance context. So that's amazing. Absolutely. Uh, Thank you so much, Nikhil sir, for doing this conversation with us. And I'm pretty sure all the audience would have gained useful insights and amazing insights for in the field of data analytics. And I'm pretty sure they'll get a good head start कि अब उन्हें पता चल गया किस direction में जाना if they want to go about making a career in data analytics individually, or how to integrate that in whatever domain you are into. So thank you so much. Thank you, Pooja. It was a pleasure.